So, good evening everyone. शुभ संध्या ମୁଁ ହଉଛି ଅମ୍ଲାନ अंशुमत ସାହୁ एम्स भुवनेश्वर रे एमबीबीएस छात्र मोर नीट 2022 रे ऑल इंडिया रैंक थिला 424 आज आमे पढिबा केमिस्ट्री रो क्लास 11th यूनिट 5 थर्मोडायनामिक्स तार पार्ट 1 आमे पढिबा आज थर्मोडायनामिक्स को आमे 3 दिन रे 3टा पार्ट रे पढिबा आज रे आमे पढिबा एंथैल्पी एंट्रोपी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आउ थर्मोकेमिस्ट्री ए चारटा टॉपिक आज आमे कवर करबा तो फर्स्ट बेसिक रू स्टार्ट करिवा फर्स्ट समराइज करिवा तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवा सो फर्स्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी may be transformed from one form to another एडा में जानचे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी क्रिएट हे परिबनी कि डिस्ट्रॉय हे परिबनी ओनली गोटे फॉर्म रो आउट फॉर्म को ट्रांसफॉर्म हे परिबो बा कन्वर्जन हे परिबो द तो थर्मोडायनामिक्स रे कोन स्टडी करा जाय एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करा जाय नाउ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें पढ़िबा तापरे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम अंडरगोइंग द चेंज होची मैटर ऑफ कंसर्न थर्मोडायनामिक्स रो laws of thermodynamics apply only when a system is in equilibrium or moves from one equilibrium state to another equilibrium state तो laws of thermodynamics केबे apply हबो जेतेबेले equilibrium रे रहबो system को equilibrium रे रहबा गोटे important criteria for the law of thermodynamics to be applied or सेकंड क्राइटेरिया होची इधर से गोटे इक्विलिब्रियम स्टेट रो आउट इक्विलिब्रियम स्टेट को कन्वर्ट होतो मींस हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट ही कंसीडर करबा द मोड ऑफ चेंज सेडा एते इंपोर्टेंट नहीं स्टेट फंक्शन हम आगु पढ़िबा सेडा केमिदी ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम ऊपर डिपेंड करे को थ्रू चेंज हेची केमिदी चेंज हेची प्रोसेस ऑफ चेंज सेडा मैटर करेनी तो स्टार्ट करिवा सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स सिस्टम कोन सिस्टम होची सेही पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जोटा को हमें स्टडी करिवा और बाकी सेटा छडा बाकी जहा रहला यूनिवर्स से होची सराउंडिंग तो यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो हमें जो पार्ट को स्टडी करिवा जो पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी करिवा सेटा होची सिस्टम तो एंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम तो हम जेतबे सिस्टम को स्टडी करिवा सिस्टम बाहर कोन होची सेटा हमर मैटर ऑफ कंसर्न नहीं हमें ओनली सिस्टम को ही फोकस करिवा Next, which the wall that separates the system and the surrounding is called the boundary database. किछ नहीं थे. Now three types of system बढ़िया open system, closed system, isolated system. Open system रे कौन होगा exchange of energy and matter between system and surrounding. Open system सेड़ा को आवा जेतोड़े system of surrounding मित्रे both energy और matter exchange ही परियो बा conversion ही परियो. फॉर एग्जांपल होची प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर एक गोटे ओपन बीकर जदी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करी प्रोडक्ट फॉर्म करछन सेडा होची ओपन सिस्टम नेक्स्ट होची क्लोज सिस्टम रे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग क्लोज सिस्टम रे कोन हबो एनर्जी एक्सचेंज हे पारे बट मैटर एक्सचेंज हे पारेवनी और एटार एग्जांपल होची प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ क्लोज्ड वेसल presence of reactants in an open vessel थिला open system एटा गोटे closed vessel रे जदी reactants react करी products form करिवे तो सेतरे एनर्जी इधर से एनर्जी एब्जॉर्ब करियो सराउंडिंग रु एंडोथर्मिक हेतिले और रिलीज करियो एक्सोथर्मिक हेतिले बट मैटर से भितरे ही रहला से सिस्टम भितरे आइसोलेटेड सिस्टम रे एनर्जी भी एक्सचेंज हबनी मैटर भी एक्सचेंज हबनी फॉर एग्जांपल जदी थर्मोस फ्लास्क रे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट अछि थर्मोस फ्लास्क गोटे इंसुलेटेड वेसल तो से हीट एक्सचेंज को भी बंद करिवो और मैटर भी से भीतर एक्सचेंज हे परिवनी तो आइसोलेटेड सिस्टम रे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहबो केना वर्क भी होनी हीट भी एक्सचेंज होनी तापर स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करिया पे हमको दरकार स्टेट फंक्शंस बा स्टेट वेरिएबल सेडा होचनी प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर होचनी स्टेट फंक्शन सेमानगर फाइनल और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम ऊपर ही डिपेंड करियो मोड ऑफ चेंज ऊपर डिपेंड करियो नहीं तो पीवीटी आर नोन एज द स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस बिकॉज़ देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट एंड नॉट ऑन हाउ इट रीच्ड से पाथ ऊपर डिपेंड करियो नहीं पाथ फंक्शन हो चनी वर्क ऑफ हीट पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर नाउ द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन इंटरनल एनर्जी कौन इंटरनल एनर्जी होची टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम होची इंटरनल एनर्जी चेंज करिया पे हमें इधर हीट चेंज करि परिया सेटा मींस हीट तक दे परिया कि सिस्टम रो हीट नहीं परिया वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम सिस्टम ऊपर काम करि परिया बा सिस्टम जदी वर्क करिया तो सारा एनर्जी यूटिलाइज होबो बा मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम मैटर एंटर करिवो बा सिस्टम छाडी के जीवो ए तीनटा वे रे इंटरनल एनर्जी चेंज हे परिवो
Now work is this would not allow the exchange of heat between the system and surroundings through its boundary, and we call this type of system as adiabatic. जदि heat exchange गोटे system prevent करुची but matter exchange ହେଇ पारुची सेटा कहबे हम adiabatic. Heat जदि Q equal to 0 for a process, it is known as adiabatic process. तो सही process रे heat exchange हबनी, heat constant रहेगा. Adiabatic process is a process in which there is no transfer of heat between the system and the surrounding. और जो wall system surrounding को divide करियो से होची adiabatic wall. Adiabatic work कौन? Adiabatic process रे जो work करा हबो सेटा को कहबो adiabatic work. Adiabatic work रो कौन हबो हमें जानछे first law of thermodynamics जोड़ा हम आगे रे पढ़िबा, but एडी से गोटे basic जिंस कहि देछि. सेटा होची the work required to bring about a change of state is equal to difference between the value of U in one state and that of another state. First law of thermodynamics को है कि change in internal energy equal to work done plus heat exchanged. तो एई केस रे जदी सेटा adiabatic अछि तो heat exchange equal to 0 हो जिवो, तो change in internal energy equal to work done हो जिवो. तो सेटा लिखा अछि adiabatic process रे change in internal energy equal to work done. Next होची work done in adiabatic is positive and work is done on the system and internal energy increases. जदि system ऊपर work कराला internal energy increase करिवो सेटा positive adiabatic work हबो और negative adiabatic work हबो जेतेबेले system निजे काम करिवो on the surrounding ଆଉ तार internal energy utilize हबो decrease हबो. तो एटे change in internal energy is equal to work in adiabatic हबो काइना heat change equal to 0. Now हमें देखियो अबे heat. तो work और heat एदिटा होचनी path functions. एई केस रे से कहछि कि गोटे एमिदिया केस नेबा जोटे कांस्टेंट वॉल्यूम रहबो. कांस्टेंट वॉल्यूम रहला माने वर्क डन इक्वल टू 0 हो जिवो. काहे कि थर्मोडायनामिक्स रे वर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. जदि चेंज इन वॉल्यूम 0 होला यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होला तो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जिवो. आउट केस रे भी वर्क 0 हो जदि वर्क इज डन अगेंस्ट वैक्यूम जोटा को फ्री एक्सपेंशन कहल जाय. फ्री एक्सपेंशन रे वर्क डन 0 हुए काहे ना सेतरे वर्क इज डन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सटर्नल प्रेशर सेतरे नहीं. वर्क कौन होला? वर्क होची पी डेल वी. जदि एइदर वॉल्यूम कांस्टेंट हला तो वर्क डन इक्वल टू 0 हो जिवो काहे ना डेल वी इक्वल टू 0 माने वॉल्यूम चेंज होनी. सेकंड केस रे वर्क इक्वल टू पी डेल वी जदि प्रेशर एक्सटर्नल 0. एक्सटर्नल प्रेशर 0 केते हो जेतेबेले हमें फ्री एक्सपेंशन करिया बा वैक्यूम अगेंस्ट वर्क करिया. वैक्यूम अगेंस्ट वर्क करिया माने एक्सटर्नली किछि अपोज करिया पाइ नै, किछि अपोज करिया पाइ नै माने वर्क डन इक्वल टू 0 हो. तो फर्स्ट केस नै अछि व्हेन नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम माने सेटा हो जोडा आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस रे जदि वर्क डन 0 होला तो ऑब्वियसली डेल यू कोन हो जिवो हीट चेंज सहित इक्वल हो जिवो. तो आइसोकोरिक प्रोसेस रे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट. तो एटे क्यू पॉजिटिव केतेबेले हो जेतेबेले heat is transferred from the surrounding to the system of Q negative हो जेतेबेले system निजर heat lose करी internal energy को lose करी. एटा होची first law of thermodynamics. del U equal to Q plus W. ଆଉ del U गोटे state function ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ depend କରିବ only on the initial and the final state, whereas Q ଆଉ W होचंदी work functions. Q and W vary depending on how the change is carried out, but del U depends on is independent of the way the change is carried out. Okay, so del U होची state function, Q और W होचंदी path functions. So if there is no transfer of energy or work done, that is W equal to 0 and Q equal to 0, then del U equal to 0. तो it clearly लिखा है isolated system रे del U equal to 0. Isolated system रे del U equal to 0 means सेटा work भी 0 होची और heat exchange भी 0 होची. तो isolated system case रे change in internal energy 0 होगा. तो change in internal energy equal to Q plus W is a mathematical statement for first law of thermodynamics. Energy of an isolated system is constant. Energy constant माने change in internal energy 0. कहने final minus initial 0 होगा. Final equal to initial. Now law of conservation of energy, एटा ही obviously हमें आरंभ में कहते हैं energy can either be created nor be destroyed, only can be transformed from one form to another. Now what a problem एटा example दे change सेट सेटा कर दो. Express the change in internal energy of a system when no heat is absorbed by the system from the surroundings but work is done on the system. No heat is absorbed. Heat absorb होनी और work obviously है पार्ची. तो एटा ଗୋଟେ adiabatic answer हबो. देखो wall is adiabatic हला. Second, no work is done on the system, but amount of is taken out is given out to the surrounding. It a work होनी
बट Q होची हीट एक्सचेंज पॉसिबल अछि तो वॉल जो अछि से थर्मली कंडक्टिंग वॉल हबो बट वर्क होनी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहबो तो एटा आइसोकोरिक प्रोसेस हबो देखो थर्मली कंडक्टिंग वॉल से खाली टाइप ऑफ वॉल पचारछि now amount of work done by the system and amount of heat is supplied to the system whatever system it be work भी हे परछि heat भी exchange हे परछि means एटा गोटे क्लोज सिस्टम हबो होला now zeroth law of thermodynamics एटा जे बहिरे देनी हम कहि देबी zeroth law of thermodynamics कहे कि जदि तीनटा सिस्टम अछि गोटे होछि A गोटे B गोटे C आउ तार जो स्टेट फंक्शंस हम नेइथिले प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सिस्टम ए रो सिस्टम बी सहित सेम अछि मीन सिस्टम ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम माने कोन इक्विलिब्रियम होछि कि टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल वॉल्यूम आर इक्वल एंड प्रेशर इज इक्वल तो जदि ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम बेसिकली एटा थर्मल इक्विलिब्रियम निया जाय बट जनरली इक्विलिब्रियम हम कहि परिया बट एग्जैक्ट लॉ रे थर्मल इक्विलिब्रियम कह जाय जी मींस if temperature of system A equal to temperature of system B and temperature of system B is equal to temperature of system C then temperature of system A equal to be C haba means जदि A और B thermal equilibrium असंति B C thermal equilibrium असंति then A C भी thermal equilibrium रे रहेबो नेक्स्ट होची वर्क हमें ऑब्वियसली पढ़ले प्रेशर वॉल्यूम वर्क ର फॉर्मूला भी हमें ଏବେ ତଳେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ यूनिक स्पेसिफिक कंडीशन ପାଇଁ तो जनरली वर्क ର फॉर्मूला होची माइनस पी एक्सटर्नल इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मींस एट पी एक्सटर्नल होची ଗୋଟେ एक्सटर्नल प्रेशर जो अगेंस्ट हमें वर्क करछे और एटा सब बेले मोस्टली ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर हबो जो पॉइंट रे इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करी करी एक्सटर्नल प्रेशर से तो इक्वल है जीवा वर्क जन्मे जमे हम करबा इंटरनल प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर है जीवा सेटा इक्विलिब्रियम अटेन है जीवा वर्क डन इक्वल टू से पॉइंट रू वर्क डन जीरो है जीवा तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम तो एटा नेगेटिव साइन कोन देखौची जदी फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम अछि मींस वर्क डन एटा नेगेटिव होबो काहे कि वर्क डन नेगेटिव होबो काहे ना सिस्टम निजर एनर्जी को यूज करे कि वर्क करछि तो एटा वर्क डन द नेगेटिव हबो है ना compression work is done on the system रे work done positive हबो means final volume जदी initial volume टू छोटा हबो तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई है कि पॉजिटिव है जीवो सेही केस रे वर्क डन इक्वल टू पॉजिटिव हबो means जदी सिस्टम एक्सपैंड करूछि बा निजे वर्क कर निजर इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करछि तो सेही केस रे वर्क नेगेटिव हबो और जदी सिस्टम ऊपर वर्क होछि सिस्टम रो वॉल्यूम को डिक्रीज कराउछि तो कंप्रेस कराउछि तो सेही केस रे वर्क पॉजिटिव हबो now vf minus vi will be negative and negative multiplied by negative एटा हम कहली if the pressure is not constant at every stage now एटा हमें जो पढ़ुतले एटा होची formula for irreversible process और reversible process कोन irreversible process रे external pressure constant रहेगा but reversible process रे एटा देखो लिखा है a process or change is said to be reversible if a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change. A reversible process proceeds infinitely slowly by series of equilibrium states such that system and surroundings are always in near equilibrium with each other. तो एटा से कहूची कि irreversible process रे external pressure constant अछि सेटा गोटे सिंगल इक्विलिब्रियम भले आमे गोटे सिंगल इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करिया पे सेटा काम करे बट रिवर्सिबल प्रोसेस रे इन्फिनिटेसिमल चेंज हुए गोटे गोटे एवरी मोमेंट रे इन्फिनिटेसिमल चेंज हुए और सेटा इन्फिनिटली स्लोली प्रोसीड करे जोथरे बहुत सारा इक्विलिब्रियम स्टेट रो कॉम्बिनेशन होची रिवर्सिबल प्रोसेस मींस ऑलमोस्ट एवरी स्टेट एटा होची देखो एटा होची रिवर्सिबल कंडीशन एटा होची इरिवर्सिबल एटा गोटे अछि एटा अधिका प्रोसेस अलगा प्रोसेस सेपरेट इक्विलिब्रियम स्टेट एटा एते छोट अछि जे एटा ऑलमोस्ट गोटे सिंगल प्रोसेस वाला है जायछि बट एथरे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल इक्विलिब्रियम स्टेट्स प्रेजेंट अछनी आउ एवरी पॉइंट रे सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इन नियर इक्विलिब्रियम अछनी सही केस रे कम हबो p एक्सटर्नल इक्वल टू p इंटरनल हम नहीं परिबा काना एवरी पॉइंट रे एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर तो रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल केस रे तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ p एक्सटर्नल इनटू vf माइनस vi बट रिवर्सिबल केस रे p एक्सटर्नल इक्वल टू p इंटरनल हबो तो सही केस रे फार्मूला कोन हबो यदि p एक्सटर्नल तो रिवर्सिबल रे इन्फिनिटेसिमल चेंज कोछि माने प्रति मोमेंट रे छोट चेंज होता देखो द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट सो दैट इट इज ऑलवेज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस मींस p एक्सटर्नल जो अछि
सी जस्ट ग्रेटर देन द पी इंटरनल इनफिनिटेसिमल माने बहुत कम डिफरेंस अछि बट स्टिल से ग्रेटर अछि त एई केस में बाहरिबा बहुत प्रति इक्विलिब्रियम स्टेट रे बहुत छोट छोट वॉल्यूम चेंज होबो सेटा को हम डीवी नै परिबा और तार टोटल वर्क टा हम इंटीग्रेट करि परिबा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम vf to vi ना प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल आर नॉन इरिवर्सिबल प्रोसेस एटा हम जानले तो से कहूची कि रिवर्सिबल कंडीशन रे कोन हो ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ପି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ जो ଅଛି ସେ ପି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଡେଲ ପି ହବ ନା ନାଇଁ ଡେଲ ପି ଏଠି ଡେଲ ପି କୁ ଏଠି ଡେଲ ପି କୁ କଣ ଲେଖା ହବ ଏଠି ଡେଲ ପି କୁ ଡିପି ଲେଖା ହବ କାହିଁକି ଡିପି ଲେଖା ହବ କାହିଁକି ନା ବହୁତ କମ ପ୍ରେସର ଚେଞ୍ଜ ऑलमोस्ट इक्वल कहले ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट इक्विलिब्रियम अछन तो पी एक्सटर्नल इक्वल पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी और से डीपी टा को हमें नियरली जीरो कंसीडर कर परिया तो पी एक्सटर्नल को हमें पी इंटरनल लिखि परिया ना नहीं पी इंटरनल लिखि परिया हमें जानचे पी इंटरनल होची प्रेशर ऑफ द गैस इनटू वॉल्यूम इक्वल एनआरटी एडा हम स्टेट्स ऑफ मैटर रे पढ़थिले यूनिवर्सल गैस लॉ तो सही केस रे हमें पी इंटरनल को एनआरटी बाय वी नहीं परिया तो सही केस रे वर्क रिवर्सिबल इक्वल टू एनआरटी बाय वी है जीवन ने और सेटा वी एफ रु वी आई जाय होची तो एई केस रे जब इंटीग्रेशन करिया तो आंसर आसीबो माइनस एनआरटी नेचुरल लोगारिथम ऑफ वी एफ बाय वी आई तो ये केस रे माइनस 2.303 एनआरटी log वीएफ बाय वीआई तो ये फार्मूला इंपोर्टेंट एटा होची एट कांस्टेंट टेंपरेचर दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेंपरेचर काहे नहीं आना बिकॉज एई जो फार्मूला सेटा कांस्टेंट टेंपरेचर पई एप्लीकेबल जदी इंटरनल प्रेशर इक्वल टू कोन हो कांस्टेंट टेंपरेचर अछि और कांस्टेंट वॉल्यूम अछि सही केस रे पी इंटरनल इक्वल एनआरटी बाय वी निया नॉले टी को तो सेपरेटली इंटीग्रेट करिया पई पड़ता ना जदी कांस्टेंट टेंपरेचर ना था तो एई केस रे कांस्टेंट टेंपरेचर बा आइसोथर्मल प्रोसेस जो कहू सही केस रे वर्क डन इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी log वीएफ बाय वीआई हो और जदी आइसोथर्मल प्रोसेस अछि हम जानछि टेंपरेचर चेंज होनी टेंपरेचर चेंज जदी होनी तो डेल यू इक्वल टू 0 हो काहे कि काहे ना डेल यू रो फार्मूला कोन डेल यू रो फार्मूला होछि सीवी डेल टी ना नहीं एनसीवी डेल टी डेल यू रो फार्मूला होछि एनसीवी डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम रे जहाँ भी हीट एक्सचेंज होला सेटा होछि डेल यू और डेल एच होछि जोड़ा एंथैल्पी एनसीपी डेल टी तो जदि टेम्परेचर चेंज होनी डेल टी इक्वल टू 0 आइसोथर्मल प्रोसेस से केस रे डेल यू और डेल एच दीटा जाको 0 एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम वेयर पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0 मो अभी अभी कहथिली प्री एक्सपेंशन रे कोन हो वर्क डन नो वर्क इज डन तो सही केस रे यू इक्वल टू हीट एट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम काहे हो काहे ना एक्सटर्नल वर्क किछि भी करा हो नेक्स्ट आइसोथर्मल एंड प्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस isothermal and pre-expansion of an ideal gas work equal to 0 hobo because pre-expansion isothermal so del u equal to 0 hobo और यदि del w equal to 0 del u equal to 0 then q is also equal to 0 hobo because a formula apply हो now यदि isothermal irreversible isothermal रे work done कोन isothermal कहछि माने q equal to minus w आसीबो because del u equal to 0 अछि और irreversible कहछि वर्क डन रो फार्मूला कोन माइनस ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू vf माइनस va तो सेटा एड लिखिछि माइनस माइनस एक प्लस है वाला फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल ऑब्वियसली एडा q इक्वल माइनस w इक्वल nRT ln vf by va और यदि एडियाबेटिक कहला q इक्वल टू 0 तो del u इक्वल टू वर्क एडियाबेटिक नेक्स्ट एंथैल्पी रो फार्मूला होछि del u एंथैल्पी रो फार्मूला होछि del u प्लस p del v हला अबे एंथैल्पी रो फार्मूला जे del u इक्वल प्लस p del v होला देखो del h जदी नेगेटिव अछि सेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होबा और del h जदी पॉजिटिव अछि सेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन होबा एटा इंपोर्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जदी वॉल्यूम कांस्टेंट अछि माने डायरेक्टली वर्क डन इक्वल टू 0 तो del u इक्वल टू q एट कांस्टेंट वॉल्यूम होला ना तो del u इक्वल टू q एट कांस्टेंट वॉल्यूम होला एबे हम जान छ कोन del h इक्वल टू del u प्लस p del v से कहै छी कांस्टेंट वॉल्यूम तो एटा 0 होला तो del h इक्वल टू del u असला इक्वल टू q भी असला तो कांस्टेंट वॉल्यूम रे del h इक्वल टू del u इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है जो
नाउ जदि हम हीट एबे ही यूनिवर्सल गैस लो यूज करिया तो P del V इक्वल टू del N G RT हो किस को केस रे P del V इक्वल टू del N G RT हो ना नहीं तो हमें del U को del H को del U प्लस del N G RT भी रख पारिया तो यही केस में हमें कैलकुलेट कर पारिया बाय लुकिंग एट द रिएक्शन केते मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस हेची बा केते मोल्स ऑफ गैस मींस नेट मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज करची कि डिक्रीज करची सही बेसिस रे हमें कहि पारिया कि एंथैल्पी ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी चेंज हेची ना इंटरनल एनर्जी चेंज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज हेची हैला ये क्वेश्चन दे देखो इफ वाटर वेपर इज assumed to be a perfect gas. Molar enthalpy change for evaporation of 1 mole of water at 1 bar at 100 degrees Celsius is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degrees Celsius. तो ये हमें first equation लिखिएगा H2O liquid to H2O gases असला यही formula use होगा del H equal to del U plus del NGT कहेंगे ना सी हमको मोलर एंथैल्पी चेंज दे दीजिए इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा तो यही फॉर्मूला यूज होगा तो ये हमें ऑब्वियसली सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करला पर आंसर आ जाओ 37.904 किलोजूल पर मोल. Now, extensive and intensive properties. In thermodynamics, the distinction is made between extensive and intensivity. Extensive property कौन है जोटा size of matter या mass ऊपर depend करे like mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity और जोटा depend करे नहीं सिला intensive like temperature, density and pressure और mole fraction जो भी mole proved है molarity, mole fraction सब वो extensive property है वो. Heat capacity, heat equal to C into del T. C कौन C होची heat capacity. मोलार हीट कैपेसिटी होची cm cm को कुआ जाए मोलार हीट कैपेसिटी c होची हीट कैपेसिटी cm होची मोलार हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ओके सेटा कोन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सेटा होची क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज टेंपरेचर ऑफ 1 मोल ऑफ बाय 1 डिग्री सेल्सियस जदी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रे टेंपरेचर 1 डिग्री बढ़ार अछि सेटा पे मोला मोलार हीट कैपेसिटी यूज करिया स्पेसिफिक हीट कोन 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस रे टेंपरेचर 1 केल्विन बढ़ा पे दरकार हम स्पेसिफिक हीट से स्पेसिफिक हीट बेसिस रे फार्मूला आ जिवो heat equal to specific heat into mass into temperature change. The relationship between Cp and Cv for ideal gas. मन रखो एटा ଗୋଟେ important ଜିନିଷ. Del U equal to Cv del T, del H equal to Cp del T for 1 mole of gas एटा कहछि. जदि 1 mole of gas नबानी NCV del T और NCP del T और Cp minus Cv equal to R ଆସିବ एटा important ହେଲା. Measurement of del H and del U. जदि हमें del U measure करछि सेटा obviously constant volume रे measure करिया काहे ना del U measure करते तो सेटा वर्क डन को हम 0 कर देली del U इक्वल टू QV ने जीवा और del H इक्वल टू QP ने जीवा एटा साफ साफ देखा जाउची एटा QV एटा QP देखो QV इक्वल टू del U अछि और QP इक्वल del H अछि तो सेटा पे फर्स्ट जदि कांस्टेंट वॉल्यूम नेबो तो बॉम्ब कैलोरीमीटर हम नेबो पड़े बॉम्ब कैलोरीमीटर रे वॉल्यूम कांस्टेंट तो सही बेसिस रे del U मेजर हबो बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज करिया नॉर्मल कैलोरीमीटर नॉर्मल कैलोरीमीटर यूज करी डेल एच मेजर हो बिकॉज सेटा इक्वल टू क्यूपी और सेटा ओपन हो जनरली ओपन वेसल रहबो बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर रे हबो जोड़ा गोटे कांस्टेंट प्रेशर दरकार से केसे कोन कांस्टेंट वॉल्यूम दरकार थिला डेल यू मेजर करिया पे बिकॉज डेल यू इक्वल टू क्यूवी हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर ले बट एथि हम कांस्टेंट प्रेशर दरकार तो हम अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटा कैलकुलेट करिया. Now, in an exothermic reaction, heat is evolved and system loses heat to the surrounding. The QP will be negative and LHR will also be negative. Obviously, exothermic re enthalpy negative, endothermic re enthalpy change positive. Now, reaction enthalpy. Go to reaction re the enthalpy change सेटा केन calculate करिया enthalpy change of the reaction equal to total enthalpy of products minus total enthalpy of reactants सब होला. Standard enthalpy of reactions कौन standard enthalpy is the enthalpy change for reaction when all the participating substances are in the standard state. Standard enthalpy को reaction सेतल को जेतल सब substance निजर standard state रे अछन. Standard state कौन standard state गोटे specified temperature होची गोटे substance रो standard state गोटे specified temperature रे तार pure form को कहबो at pressure 1 bar. Okay. ethanol होची तार liquid आयरन रो सॉलिड एटा होची तार स्टैंडर्ड स्टेट स्टैंडर्ड कंडीशन को माइनस वाला सुपरस्क्रिप्ट देके लिखा जाए और
जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होची 298 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर होची 1 बार। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन हम जानचे चलो और कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर रे हुए देखो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर रे हुए फेज ट्रांजिशन तो डेल एच फ्यूजन स्टैंडर्ड इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। So the enthalpy change that accompanies melting of one mole of a solid in its standard state is called standard enthalpy of fusion. तो यदि 1 मोल ऑफ सॉलिड को हमें मेल्टिंग करूचे यदि 1 मोल ऑफ सॉलिड को हमें मेल्टिंग करूचे एट स्टैंडर्ड कंडीशन तार स्टैंडर्ड फॉर्म रे बा स्टैंडर्ड स्टेट रे सेटा कुआजे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली जदि 1 मोल ऑफ लिक्विड तार स्टैंडर्ड स्टेट रे हमें कांस्टेंट टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर रे वेपोराइज कर सेटा अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सिमिलरली जदि स्टैंड गोटे सॉलिड को तार स्टैंडर्ड स्टेट रे डायरेक्ट हमें गैसियस फॉर्म रे कन्वर्ट करछे अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर सेटा अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। Standard enthalpy of formation कौन standard enthalpy change for formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of aggregation is called standard molar enthalpy of formation माने standard enthalpy of formation सेटा को आबो the enthalpy change in enthalpy जेतला 1 mole of a compound form होगा important point होची 1 mole of compound form होगा दरकार तार elements रू form होगा दरकार और से elements most stable state बा reference state रू रहिबा दरकार। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन केतले को आबो गोटे रिएक्शन रो जेतेले 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म होची से निजर एलिमेंट्स रो फॉर्म होची और से एलिमेंट्स निजर स्टैंडर्ड स्टेट रे अछन। फॉर एग्जांपल डाइहाइड्रोजन रो स्टैंडर्ड स्टेट होची हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन रो होची O2 गैस H2 गैस कार्बन रो होची ग्राफाइट और सल्फर रो होची रोम्बिक सल्फर। Now it is important to understand that standard molar enthalpy formation is just a special standard एटा कहीं की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होबनी कहीं ना कैल्शियम कार्बोनेट मेजर एलिमेंट रो फॉर्म हो कि आउ कोनोसी जिंस रो फॉर्म हो एटा कहीं की होबनी बिकॉज़ इट 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो तो एटा जदि हम डिवाइडेड बाय 2 करिया तो ई केस रे द रिएक्शन एंथैल्पी होची सेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी रो 2 टाइम्स तो ई केस रे जदि हम डिवाइड बाय 2 करिया तो हमको फॉर्मेशन एंथैल्पी मिलिबो। ओके standard enthalpy of formation of an element in reference state in the is taken as 0 जदि हमें गोटे एलिमेंट रो फॉर्मेशन एंथैल्पी काउंट करबा तार स्टैंडर्ड स्टेट मींस से एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट रो फॉर्मेशन करबा पे केते एंथैल्पी चेंज दरकार सेटा 0 आसीबो बिकॉज़ से ऑलरेडी तार सब मोस्ट स्टेबल स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट ताको फॉर्म करिया पे आउ कोन से एलिमेंट रो रिएक्शन दरकार तो सही केस रे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 आसीबो ना कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस थर्मोकेमिकल रिएक्शन रिफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड नेवर मॉलिक्यूल्स। तो गोटे थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखला बेले ए जिंस माइंड रखे जो को बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रो जो कोएफिशिएंट्स हो सेटा नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्वड को डिनोट करे और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी रिफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफाइड बाय द इक्वेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स जते स्पेसिफाई कराई छि सेही केस पई हमको रिएक्शन एंथैल्पी देई छि फॉर्मेशन एंथैल्पी देनी फॉर्मेशन एंथैल्पी काउंट करिया पे हमको डिवाइडेड बाय गोटे एमिडिया कोएफिशिएंट करिया पड़े जोथरे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो। ओके when the chemical equation is reversed reaction enthalpy sign be reversible obviously। now Hess law कौन Hess law of constant heat summation Hess law को है कि यदि reaction takes place in several steps यदि reaction several steps रे हुए then तारा standard reaction enthalpy होची sum of standard enthalpy of intermediate reactions into which the overall reaction can be divided at the same temperature। यदि गोटे सेम टेम्परेचर रे गोटे रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स हुए देन तार टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हबो सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ सब इंटरमीडिएट रिएक्शन जोटा कॉन्स्टिट्यूट करंती से मेन रिएक्शन। तो एटा हेसलर डायग्राम देखो जदि ए को हमें बी रे कन्वर्ट करछे सेठे रिएक्शन एंथैल्पी डेल एच आर आसी एक बट ता भितरे तीनटा माइनर स्टेप्स अछि ए टू सी टू डी और डी टू बी सेठे डेल एच 1 डेल एच 2 और डेल एच 3 आसी। तो del H of reaction enthalpy आसीबो del H1 plus del H2 plus del H3 तो sum of all enthalpy change of the intermediate reactions।
नेक्स्ट होची स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोची एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोस कंबशन व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स। गोटे स्पेसिफाइड टेंपरेचर रे जदि तार सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट रे अछंती आ सेटा कंबशन अंडरगो करला सेथि जते पर मोल एंथैल्पी चेंज को कहै स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हे जिवो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हे जिवो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। एटा मन रखो जदि फॉर्मेशन एंथैल्पी हम कैलकुलेट करछे तो सेडा रहे जिवो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। बट जदि हमें कंबशन एंथैल्पी नहीं छे तो सेट हे जिवो टोटल एंथैल एटा देखो टोटल एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट में जदि फॉर्मेशन एंथैल्पी न हो तो टोटल एंथैल्पी चेंज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी प्रोडक्ट एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जदि हमें न हो कंबशन एंथैल्पी बा बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दीडा जा पई एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हे जो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एटमाइजेशन एंथैल्पी कहूँ कि जदि 1 मोल ऑफ बॉन्ड को हमें ब्रेक करबा आ से सबू कंपाउंड को हमें एटम फॉर्म रे गैसियस फेज रे प्रोवाइड करिया देन 1 मोल ऑफ कंपाउंड को ब्रेक करिया पई जो एंथैल्पी दरकार सच दैट तेरा पूरा एटम्स रे ब्रेक हे जो से एटम्स गैसियस फेज को पळेबे सेडो को जे एटमाइजेशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होची जदि 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करिकि तार सब प्रोडक्ट को हमें गैसियस फेज रे ऑब्टेन करिया सेटा होची बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी कोन मीन बॉन्ड एंथैल्पी देखो जेमति एटा CH4 रे फर्स्ट बॉन्ड टा ब्रेक करिया पई कम एनर्जी दरकार पड़ला तापर आउट अधिका लास्ट ब्रेक करिया पई बहुत कम दरकार पड़ला तो एठे ए चार्टर एवरेज ने कि मीन बॉन्ड एंथैल्पी पड़ा हबो फॉर द CH बॉन्ड। देखो रिएक्टेंट्स रो टोटल बॉन्ड एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट टोटल बॉन्ड एंथैल्पी होची इन केस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कोन लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ऑब्वियसली लैटिस एंथैल्पी गोटे आयनिक कंपाउंड पर ही डिफाइंड हो सेटा सेही एंथैल्पी चेंज को हो जतले 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को हमें डिसोसिएट करिकि टोटली गैसियस आयंस रे हम कन्वर्ट कर दबा आयंस रे कन्वर्ट कर दबा जो जगह गैसियस स्टेट रे तो लैटिस एंथैल्पी सेटा को हो जतले गोटे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करिकि आयंस रे कन्वर्ट करिया और से आयंस गैसियस स्टेट रे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करबा जनरली बॉर्न हैबर साइकिल यूज करा जाय। बॉर्न हैबर साइकिल कोन देखो जेमिति कि NaCl को हमें कन्वर्ट कर ले Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस। ओके Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से भितरे हमें बहुत सारा छोटो रिएक्शन इंटरमीडिएट करी नीचे तो एटा हैश लॉ ऑफ समेशन यूज हबो। हैश लॉ ऑफ समेशन केमे यूज हबो फर्स्ट रे सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस करला सेटा सब्लिमेशन एंथैल्पी तबरे सोडियम गैस को सोडियम प्लस आयन गैसेस रे कन्वर्ट कराला सेटा को अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लोरीन हाफ ऑफ क्लोरीन टू गैसेस को हम क्लोरीन गैस से कन्वर्ट करले तो एटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हला। तापर क्लोरीन गैसेस रे इलेक्ट्रॉन गोटे ऐड करले तो सेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हला लास्ट रे हमको Cl माइनस गैस और N प्लस गैस में तो ये सब जगह एडिशन हे जीवो टोटल हमरो लैटिस एंथैल्पी तेरा हम देख पले लैटिस एंथैल्पी सब जगह एडिशन हम बाय बॉर्न हैबर साइकिल बाय हैश लॉ। ए दिला फार्मूला इंपोर्टेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रो फार्मूला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होची माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT और आयोनाइजेशन एंथैल्पी होची आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT। ओके एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कोन जतले 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को हमें गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे डिसॉल्व करबा जते एनर्जी प्रोड्यूस हो सेडा होची एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और जदि हमें इनफिनाइट डाइल्यूशन सेडा करबा मींस सेडा इनफिनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे डिसॉल्व करिया जो एनर्जी प्रोड्यूस सेडा होची एंथैल्पी ऑफ इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होची लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी काहे की बिकॉज जदि गोटे कंपाउंड अछि ए बी सॉलिड सेडा फर्स्ट रे हमें जतोला ब्रेक करिया तो से ए प्लस गैसेस और बी माइनस गैसेस से कन्वर्ट हो सेडा होछि लैटिस एंथैल्पी तापर ए प्लस गैसेस और बी माइनस गैसेस वाटर मॉलिक्यूल सगर इंटरेक्ट करिकि एक्वस आयंस फॉर्म करिए जोड़ा को जो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो सॉल्यूशन एंथैल्पी इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी
प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लियरली लिखा है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कोन एडा होची सॉल्यूशन जदि गोटे सॉलिड को हमें सॉल्वेंट रे डिसॉल्व करले जा एंथैल्पी चेंज असला 1 मोल पे सेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जदि हम डाइल्यूट करिया गोटे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज एडिशन ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एटा हम डाइल्यूट करले 1 मोल पे तो सेटा होची एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन अब एनसीईआरटी रो किछ एक्सरसाइज देखि देबा choose the correct answer a thermodynamic state function is a quantity thermodynamic state function कोन whose value is independent of the path काहेकि एडा मु तुमको कहिसली थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन होचनी प्रेशर वॉल्यूम और टेंपरेचर जोड़ा पाथ ऊपर डिपेंड करेनी पाथ फंक्शन पाथ ऊपर डिपेंड करे लाइक वर्क ऑफ हीट used to determine heat changes भूल determine pressure volume work heat ऐसो तो देखो heat is not a state function work is not a state function temperature only state function नहीं independent of path होची right answer adiabatic condition ପାଇଁ correct कौन heat exchange equal to 0 enthalpies of all elements in the standard state जदि standard state रे obviously देखो enthalpies of elements in the standard state एबे मु कहथि standard state रे जदि गोटे element रो formation enthalpy हम calculate करिवा सेटा 0 आसीबो because हम किछि enthalpy change दरकार नै सेटा already standard state रे अछि internal energy change of combustion of methane is minus x value of enthalpy change तो एटा हमें combustion of methane देखिया combustion of methane देखो CH4 plus oxygen gives rise to carbon dioxide plus water हेगला ना बैलेंस बैलेंस हेगला तो ठीक CH4 गोटे गैस ऑक्सीजन गोटे गैस कार्बन डाइऑक्साइड गोटे गैस बट वाटर लिक्विड टोटल गैसियस चेंज केते होचे डेल एनजी केते होचे देखो चेंज इन मोल्स ऑफ गैस केते होचे गोटे मोल माइनस एपटे तीनटा मोल तो -2 होची हमें जानछे डेल एच इक्वल टू डेल यू माइनस डेल एन जी आर टी मींस एठे डेल एच इक्वल टू डेल यू केते देछि -x देछि माइनस डेल एन जी आर टी हे जीवो minus of -2RT that is minus x plus 2RT तो ये del h कौन होगा जब del u होची -x तो ये value of del h कितना होता है del h एटे del u संगरे plus 2RT अच्छी means del h obviously del u to बड़ा अच्छी तो आंसर होगा greater than del u the enthalpy of combustion of methane graphite dihydrogen are एतिक enthalpy of formation of CH4 gases will be एटा हमें देखि परिया फॉर्मेशन ऑफ CH4 पे हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखिबा कार्बन ग्राफाइट प्लस H2 gaseous gives rise to CH4 gaseous एटा काहे कि मैं लिखली काहे ना फॉर्मेशन एंथैल्पी पचासे माने प्रोडक्ट 1 मोल रहबा दरकार तार स्टैंडर्ड स्टेट रे रहबा दरकार एलिमेंट्स रु फॉर्म हेता दरकार और एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट रे रहबा तो ई केस रे फॉर्मेशन एंथैल्पी केमिति हम कैलकुलेट करिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन देछि से एंथैल्पी ऑफ कंबशन देछि माने एंथैल्पी एट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोन है ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कहथिली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ total combustion enthalpy of reactants minus total combustion enthalpy of production तो total combustion enthalpy of reactants कोन कार्बन ग्राफाइट रो combustion enthalpy होचे -393.5 plus 2 into combustion enthalpy of hydrogen combustion enthalpy of hydrogen एति तो -2 into 285.8 minus of total combustion enthalpy of product रो total combustion enthalpy केते एति तो -890.3 तो एटा जदि हमें कैलकुलेट करिया द आंसर आसीबो -393.5 -2 into 285.8
plus 890.3 minus 74.8 kilojoule. Okay. Now reaction A plus B gives us to C plus D plus Q is found to have a positive entropy change. The reaction will be एटा एई क्वेश्चन टा हम करवानी बिकॉज एटा फ्री एनर्जी चेंज इन्वॉल्व करछि जोड़ा हम अभी नहीं पढ़े ने एटा नेक्स्ट क्लास रे करबा अब हम करबा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन कोछि a system is said to be dash if it can neither exchange matter nor energy देखो मैटर भी एक्सचेंज कर पानी एनर्जी भी एक्सचेंज कर पानी तो कौन हबो आइसोलेटेड सिस्टम हो राइट heat content of the product is more than that of reactant cell heat content of product is more than that of reactant यदि product reactant रो अधिका heat रखिछि means obviously reactant energy को heat को external surroundings रो absorb करछि reactant absorb करले तो product पखरे more heat हला यदि absorb करछि सेटा कोन हबो endothermic reaction हो enthalpy is a dash property obviously enthalpy गोटे extensive property because सेटा depend करे amount of matter ऊपर difference between heats of reaction at constant pressure and constant volume for the reaction in kilojoule difference between heats of reaction at constant pressure heats of reaction at constant pressure heat of reaction at constant pressure minus heat of reaction at constant volume माने से कहूची del h minus del u से हमको कौन पचारची देखो से हमको पचारची difference between heat of reaction at constant pressure and heat of reaction at constant pressure heat of reaction at constant pressure होची qp minus qv पचारची हम जानचे qp होची del h minus qv होची del u तो से हमको del h minus del u पचारची del h minus del u होची कौन हम जानचे del ngrt तो gaseous केते कौन चेंज होची देखो एपटे 12टा गैस अछि एपटे 15टा गैस अछि एपटे 12टा गैस एपटे 15टा गैस माने del ng हे गला -3 into किलो जूल रे पचास किलो जूल माने मल्टीप्लाई हे जीवो 8.314 डिवाइडेड बाय 1000 रे और टेम्परेचर होची 25 डिग्री माने 298 केल्विन 298 केल्विन को हम अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन नहीं पारियो 300 केल्विन नहीं पारियो ना तो -3 into 8.314 एटा जूल पाई डिवाइडेड बाय 1000 कले किलो जूल रसियो मल्टीप्लाइड बाय 300 केल्विन एटा अप्रोक्सीमेटली केते आसीबो -7 पॉइंट -7.43 आसीबो हला for which change del h is not equal to del e del h equal to del e केतेबेले हबो जेतेबेले del ng equal to 0 हबो एठी 1 गैस 2 गैस एपटे 2 गैस तो एटा इक्वल हबो एपटे गोटे गैसेस मोल एपटे गोटे मोल गैस एपटे 2 मोल गैस एपटे 4 मोल गैस तो ई केस रे इक्वल हबो formation standard formation enthalpy of carbon dioxide carbon monoxide and hydro and H2O are एतिकी standard enthalpy change for the reaction एतिकी will be से कौन देछि एठी formation enthalpy देछि formation enthalpy देछि reaction enthalpy 50 means total formation enthalpy of product minus total formation enthalpy of reactant पर आबो तो total formation enthalpy of product कहते हैं H2O gas रो कहते देछि -241.8 minus carbon monoxide रहुछि 110.5 minus of minus 393.5 और H2 gases निजर normal निजर standard state अछि तो तार formation enthalpy obviously 0 आसीबो तो plus 0 तार value केते आसीबो और value आसीबो 41.2 positively okay now in thermodynamics
A process is called reversible one. Reversible केतला हबो surrounding system change each other हबनी, no boundary between system surrounding भूल, surrounding is always in equilibrium with the system. एटा होची right answer. Surrounding सब वेले system सहित equilibrium रे रहइबो. Okay. Next question is direct conversion of A to B is difficult hence it is carried out by the following path given entropy change for 50 50 20 then entropy change of A to B केतला एटा हम जानचे Hess law हम use करिवा simply entropy change for A to B will be equal to entropy change from A to C plus C to D 30. देखो A to C plus C to D plus D to B होगा right कहाँ होगा A to C plus C to D plus D to B equal to 50 plus 30 minus 20 होगा कहीं minus 20 because it is a B to D रो देची B to D जदी 20 तो D to B केते होगा minus 20 होगा तो 80 minus 20 plus 60 EU right. 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state with change in internal energy एतिकी the change in enthalpy in the process in liter atmosphere is change in enthalpy करते हैं वो change in enthalpy equal to change plus del PV del PV मैंने del U plus del PV तो एटा सिंपली हमें कौन करेगा del PV plus P del V plus del P del V होगा right del U होची 30 लीटर एटमॉस्फेयर प्लस del PV 50 del PV माने V कांस्टेंट जितल रहबो सेटा तला एप्लीकेबल राइट देखो 3 लीटर्स रु 5 लीटर चेंज होची माने V कांस्टेंट नाही V कांस्टेंट नाही माने एटा इन एप्लीकेबल सेकंड होची P del V जदि प्रेशर कांस्टेंट अछि 2 एटमॉस्फेयर 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कांस्टेंट नाही तो एटा भी इन एप्लीकेबल तो खाली ए टर्म टा एप्लीकेबल हबो del P into del P केते हबो 4 into 2 sorry 4 minus 2 into del V होची 5 minus 3 equal to 30 plus 4 4 into 5 right equal to 30 plus 4 into 5 minus 2 into 3 equal to 30 plus 20 minus 6 equal to 44 हो जाएगा आंसर. Which of the reaction defines enthalpy of formation? देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रे अछि 1 मोल अछि ठीक बट कार्बन डायमंड रू फॉर्म अछि डायमंड ता स्टैंडर्ड स्टेट नहीं HF गैसियस अछि ठीक अछि हाफ मोल गैसियस तो एटा हबो राइट आंसर 2 मोल्स फॉर्म अछि माने एटा फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रू फॉर्म अछि तार एलिमेंट्स फॉर्म एटा भी हबो 2 moles of hydrogen gas are expanded isothermal and reverse it from 1 liter to 10 liter. The enthalpy change for the process will be enthalpy change कौन होगा enthalpy change होची आइसोथर्मली क्वेश्चन को एटा जदि हमें भल से थरे पढ़ देबा कैलकुलेशन करिया पे दरकार ही नहीं कैलकुलेशन करिया पे एटा दरकार ही नहीं से कोन कहै छी आइसोथर्मली माने del T equal to 0 से पचाती एंथैल्पी चेंज कौन एनसीपी डेल टी जदि जीरो तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो आसो डायरेक्ट enthalpy of vaporization of liquid is एतिकी and enthalpy of vaporization is okay entropy of vaporization एतिकी the boiling point of the liquid is देखो हमें एटा entropy पढ़िने हमें अभी entropy पढ़िने मींस हम ए क्वेश्चन टा करबानी ओके entropy पढ़िने माने हम ए क्वेश्चन टा करबानी ओके entropy पढ़िने माने हम ए क्वेश्चन टा अबे करबानी
ये क्वेश्चन आम काली करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, species which by definition is zero standard molar enthalpy of formation. Zero molar enthalpy of formation जार कार हम जो standard state अच्छी H2O gaseous standard state ने H2O liquid gaseous standard state, chlorine gaseous, देखो एडे H2O gaseous हबनी केबे भी H2O दर liquid state रहेगा। ब्रोमीन केबे gaseous हबनी काहे ना हमें जान ब्रोमीन is the only non-metal, bromine is the only non-metal which exists in liquid state at room temperature 298 केल्विन माने 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर रे निजर स्टैंडर्ड फॉर्म रे स्टैंडर्ड स्टेट रे की अछि हाइड्रो H2O गैसेस रहबनी लिक्विड रहबो ब्रोमीन लिक्विड रहबो गैसेस रहबनी क्लोरीन गैसेस रहबो तो एटा होची राइट आंसर बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, standard enthalpy of formation of carbon dioxide H2O and glucose at the standard enthalpy of combustion per gram of glucose at 25 degree celsius will be। तो फर्स्ट हमें एडी इक्वेशन लिखवा C6H12O6 in solid plus 6 oxygen gaseous will give rise to 6 carbon dioxide gaseous plus 6 H2O liquid। enthalpy of combustion केते होगा enthalpy of combustion equal to 6 into enthalpy of formation of carbon dioxide plus 6 into enthalpy of formation of H2O minus enthalpy of formation of glucose। कहीं केमिति कराला बिकॉज से एंथैल्पी ऑफ कंबशन पचासी वही केस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ से हमको देइछि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी हमको देइछि फॉर्मेशन एंथैल्पी देइछि माने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो एटे टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हला 6 मोल्स इनटू एतिकी प्लस 6 मोल्स इनटू एतिकी बट माइनस ऑफ एचएफ एटा तो हम रिएक्टेंट हला बट हमें एठी ऑक्सीजन को काहे की छाड़ देले बिकॉज़ ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन रे हम कोन पड़थिले डाई ऑक्सीजन रो स्टैंडर्ड स्टेट होची ऑक्सीजन गैस O2 गैस। तो O2 गैस इट स्टैंडर्ड स्टेट अछि स्टैंडर्ड स्टेट रे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के 0 तो एठी हमें -0 लिखले जहां न लिखले था राइट। एठी हमें कैलकुलेट करबा 6 into -400 plus 6 into -300 minus of -1300 इक्वल टू माइनस ऑफ 2900 किलोजूल पर मोल। बट क्वेश्चन को हम जदी क्लियरली एठे पढिबा हम जल्दबाजी रे एठे भूल कर देबा माइनस ऑफ 2900 आसला हम जल्दबाजी रे एठे मार देबा बट से हमहु पचारची पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज से हमको पचारची एठा हमर पर मोल आसला पर मोल रे एते आसला ग्लूकोज रो 180 हो तो एठे आंसर आसीबो -2900 डिवाइडेड बाय 180 बिकॉज़ 1 मोल रे 180 ग्राम अछि हमको पर ग्राम पचा जोड़ा आसीबो -16.12 किलोजूल पर ग्राम। तो एटा आसीबो हमर करेक्ट आंसर। तो क्लियरली क्वेश्चन पढ़िया बहुत इंपोर्टेंट से एठे पर ग्राम कहै छी देखो क्लियरली क्वेश्चन पढ़िया बहुत इंपोर्टेंट से हमको एठे पर ग्राम कहै छी हम जदी पर मोल कैलकुलेट कर देबा तो आंसर भूल आसीबो राइट। Now for the process देखो for the process H2O liquid to H2O gaseous temperature equal to 100 degree Celsius and 1 atmosphere pressure the correct choice will be correct choice कौन होगा देखो for the process H2O liquid to H2O gaseous 100 degree Celsius रे 1 atmosphere pressure रे correct choice कौन होगा এই क्वेश्चन भी हमें परे करिया बिकॉज़ एट एंट्रोपी चेंज देछि एंट्रोपी चेंज हमें एंट्रोपी भी पढ़िने राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमें काली करिया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an endothermic reaction is non-spontaneous again non-spontaneous एटा एंट्रोपी अछि एटा काली करिया हीट इंजन क्वेश्चन काली करिया ए क्वेश्चन आज करि परिया 2 carbon plus oxygen is 2 carbon dioxide enthalpy change एतिकी 2 zinc oxide 2 ZNO एतिकी now से कहछि कि कोटा एटे करेक्ट हबो कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक oxidation of carbon is not feasible oxidation of zinc is not feasible zinc can oxidize carbon। तो एठे कोडा करेक्ट हबो
del H जदि नेगेटिव अच्छी रिएक्शन टा स्पॉन्टेनियस हबो एटा भी हम काली करियो बिकॉज़ एटा भी स्पॉन्टेनिटी ऊपर अच्छी क्वेश्चन the heat required to raise the temperature of a body by 1 Kelvin is called change the temperature of a body से कोची temperature of 1 mole of the body कोई नहीं कि 1 ग्राम कोई यदि 1 ग्राम कोई था specific heat था 1 mole यदि कोई था molar thermal capacity था तो एक केस रे only heat capacity by thermal capacity over 4 b internal energy change when a system goes from state A to state B is 40 kilojoule per mole. If the system goes from A to B by a reversible path and returns to state by an irreversible path, what will be the net change in internal energy? Net change in internal energy केते हो? तो से को हमको फरक ही पड़ेनी कि देखो सी फर्स्ट कहछि कि स्टेट ए रु स्टेट बी इंटरनल एनर्जी चेंज होछि 40 सी कहछि सिस्टम ए टू बी को गोटे रिवर्सिबल पाथ रे गला तापर आउथरे बी रु ए को गोटे इरिवर्सिबल पाथ रे आसिला तो नेट चेंज इन एनर्जी केते हमें कोन कहिथिले पाथ ऊपर डिपेंड करिवनी जदि गोटे स्टेट फंक्शन देन सी ओनली फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ऊपर डिपेंड करिवो पाथ ऊपर डिपेंड करिवनी तो फाइनल स्टेट होची ए इनिशियल स्टेट भी ए बिकॉज़ ए रु ही बाहरला बी को गला अगेन ए को आसला तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम व्हिच मींस del u will be equal to 0 सी डिपेंड करिवनी कि सी रिवर्सिबल प्रोसेस ना इरिवर्सिबल प्रोसेस ना फरक पड़े इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट यदि से वर्क बा हीट हेता ना से पाथ फंक्शन हेता ना से पाथ ऊपर डिपेंड करता ना एटा स्टेट फंक्शन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऊपर डिपेंड करे अब एटा गोटे साइक्लिक प्रोसेस होला साइक्लिक प्रोसेस del u साइक्लिक equal to 0 गोटे साइक्लिक प्रोसेस रे del u 0 बिकॉज़ साइक्लिक प्रोसेस रे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम सिमिलरली del h भी साइक्लिक प्रोसेस रे 0 होबो फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम next question an ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system if Ti is the initial temperature and Tf is the final temperature which of the following statement will be correct okay reversible और irreversible process दीटा तरह से कहछि कि exchange गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रे expand ହେଇଛି gas both reversibly and irreversibly isolated system माने एठा हमें डायरेक्ट कौन लिखिबा q equal to 0 right आइसोलेटेड सिस्टम माने एठे हीट चेंज हेनी कि मैटर चेंज हेनी तो एठे del u equal to work आसीबो राइट तो Ti जदि इनिशियल टेंपरेचर Tf जदि फाइनल टेंपरेचर अछि एक्सपेंशन हेछि एक्सपेंशन ओके तो वर्क डन ए केस रे कोन हबो एडियाबेटिक प्रोसेस एटा गोटे एडियाबेटिक प्रोसेस आ हमें जानचे कि गोटे रिवर्सिबल process रे work done will be greater than in the irreversible process therefore heat absorbed in the reversible process would be greater than in the later case तो हमें जानी चाहिए कि work done in reversible process is greater than work done in the irreversible process एमती काहे गेला work done in reversible process is always greater than the work done in irreversible process एटा ଗୋଟେ important जिंस during expansion during compression उल्टा याद रखना expansion time रे expansion ଯେତେବେଳେ ହୁଏ gas ର work done in reversible process is greater than the work done in irreversible process ଯେତେବେଳେ expansion ହବ work done reversible greater than work done irreversible ହବ ତ reversible process ରେ बेसी एनर्जी यूटिलाइज हबो कि नहीं बेसी एनर्जी यूटिलाइज हबो तो टेम्परेचर फाइनल बेसी एनर्जी यूटिलाइज हे गले जो फाइनल टेम्परेचर हबो रिवर्सिबल प्रोसेस रे सेटा बेसी कम हे जिवो आ हम देखि छै कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क तो बेसी वर्क जदि रिवर्सिबल प्रोसेस रे हबो बेसी इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल बेसी इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल प्रोसेस रे खर्च हबो जदि बेसी इंटरनल एनर्जी रिवर्सिबल प्रोसेस रे खर्च होला तो अधिका टेम्परेचर अधिका एनर्जी लूज होला मींस अधिका टेम्परेचर डिक्रीज करियो तो फाइनल टेम्परेचर इन रिवर्सिबल लेस देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल बिकॉज़ रिवर्सिबल प्रोसेस रे अधिका वर्क हेची अधिका इंटरनल एनर्जी यूज हेची अधिका इंटरनल एनर्जी यूज हेची माने अधिका टेम्परेचर डिक्रीज हेची अधिका टेम्परेचर डिक्रीज हेची माने फाइनल टेम्परेचर less of the final temperature of reversible will be less than the final temperature of irreversible. Now standard enthalpy of formation at 298 Kelvin for methane is etikki additional information required to determine the average energy for CH of bond formation will be.
सी कहि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सी बस हमको देछि -74 एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन काढे पे कोन दरकार हमको CH4 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एटी कोन आसीबो कार्बन ग्राफाइट प्लस 2H2 gaseous is equal to CH4 gaseous, right? तो CH रो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी पई हमको कोन दरकार पड़ियो CH रो बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन पई हमको दरकार पड़ियो हाइड्रोजन रो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ओके तो सेटा हमको दरकार पड़ियो आउ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन बिकॉज़ गोटे जिंस मन रखो जदी से हमको पचारछि बॉन्ड फॉर्मेशन माने ऑलवेज हम कोन पढ़थिले गोटे बॉन्ड को ब्रेक करिकी तार एटा को एटम्स रे कन्वर्ट करा गला बॉन्ड को ब्रेक करिकी एटम्स रे कन्वर्ट करा गला और से एटम्स निजरो गैसियस स्टेट रे रहले तो एई केस रे हाइड्रोजन टा कंपाउंड अछि तो सेटा को हमें तार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी करबा तो सेटा गैसियस फॉर्म रे आसला बट एई केस रे एटार किछि बॉन्ड नै बट एटा गैसियस फॉर्म रे नै तो फर्स्ट एटा को कार्बन गैसियस करिया पड़ियो कार्बन गैसियस करिया पे हमको कोन दरकार सब्लिमेशन एंथैल्पी दरकार तो जदि आर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम कैलकुलेट करियर अछि हमको हाइड्रोजन रो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दरकार सब्लिमेशन दरकार नै बिकॉज़ ऑलरेडी गैस अछि बट एथिरे किछि बॉन्ड नै बट एटा को हम गैस बनिया पड़े बिकॉज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रो डेफिनेशन रखिला 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रे जते बॉन्ड अछि सेटा ब्रेक करिकि हमें एटम्स रे कन्वर्ट करिया और से एटम्स गैसियस स्टेट पे तो आंसर होछि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन एंथैल्पी चेंजेस फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस लिस्ट करा जायछि गिवन द स्टैंडर्ड स्टेट फॉर आयोडीन एंड क्लोरीन आर सॉलिड एंड गैस स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ standard enthalpy of formation of ICl gaseous will be standard enthalpy of formation of ICl gaseous केते हबो सेही केस रे हम देखिबा ICl gaseous रो standard enthalpy of formation ICl gaseous रो standard enthalpy of formation हबो chlorine gaseous plus iodine solid रो 1/2 and 1/2 right correct तो our enthalpy of formation केते हबो enthalpy of formation will be equal to a enthalpy of reaction right तो ये केस रे हमें केमिदी क्वेश्चंस जको ऐड करबा एथरा हम रिएक्शंस रो एडिशन करिया पड़ियो तो ए साइड रे हाफ ऑफ क्लोरीन गैस रहबो राइट हाफ ऑफ क्लोरीन गैस रहबो प्लस एपड साइड रहबो एठी से सब जगह बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देछि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देछि माने रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करिया पड़े तो हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ इतना that is 242.3 right plus half of 211.3 211.3 होने half of 62.76 plus half of 151 minus 211.3 that our answer is 16.73 kilojoule per mole it's approximately 16.8 next question identify the correct statement for spontaneous versus spontaneous एडा में next class करियो oxidizing power of chlorine in aqueous solution can be determined by the parameters oxidizing power of chlorine okay तो सीएटा कहछि कि एई केस रे ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम केमिति यूटिलाइज करिया
सिंपली किसी करियर नहीं, रिएक्शंस जो एंथैल्पी दीजिए से टोटल एंथैल्पी को हम ऐड कर देवा, राइट। हाफ इंटू 240 माइनस 349 माइनस 381, এই କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କଲେ ଆମର ଆସିଯିବ ମାଇନସ 610। କେମିତି କରିବା ସେ କହିଛି ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଣ୍ଟାयर ରିଆକ୍ସନ କୁ ଆମକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଏନ୍ଥାଲପି ଚେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଟାयर ରିଆକ୍ସନ କେତେ ହେବ ହାଫ ଇନଟୁ ଡିସୋସିଏସନ ଏନର୍ଜି ହାଫ ଇନଟୁ 240 हाफ इंटू 240 माइनस 349 माइनस 381, तार आंसर आ जाओ माइनस 610। ओके, now standard entropy of extrusion for the reaction the temperature will be। এই केस रे अगेन से हमको एंट्रोपी कोइछि मींस এই क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्लास करिवा। तो आज रो क्लास एंड हला, थैंक यू।